Hello everyone, welcome to my channel Chaya Classes. Today we will discuss Charter Act 1813. It is very important for all competitive exams. Let's move on the topic Charter Act of 1813. The Charter Act 1813 for the first time clearly defined the constitutional position of the British territories in India. मीन्स 1813 के चार्टर से ही पहली बार यह क्लियर किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि इंडिया से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी। यू कैन सी इन डायग्राम। नेक्स्ट, background. First, due to Napoleon Bonaparte's continental system in Europe, which prohibited the import of British goods into French allies in Europe, British traders and merchants suffered. So they demanded they be given a share in the British trade in Asia and dissolve the monopoly of the East India Company. मीन्स नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से फ्रेंच सहयोगी देशों में ब्रिटिश गुड्स का आयात नहीं हो रहा था। इसकी वजह से व्यापारी ब्रिटिश सरकार से यह मांग कर रहे थे कि वो कंपनी की एशिया में व्यापार की मोनोपोली खत्म कर दे। नेक्स्ट, एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेज़ली। ड्यूरिंग हिज 7 years governorship, Wellesley enlarged the territories of the company to such an extent that almost whole of India, due to which the company debt had increased a lot. So companies approached the British Parliament for financially help. वेलिजली की विस्तारवादी नीति के चलते कंपनी का सेना पर खर्च बढ़ता गया, जिसके चलते कंपनी का खर्च भी बढ़ता गया। इसको कम करने के लिए कंपनी ने ब्रिटिश संसद से फाइनेंशियली हेल्प मांगी। Thereupon, the Parliament appointed a select committee to inquire into the company's state of affairs in India. ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले की जांच करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट की। फाइनली, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द न्यू बिल which known as Charter Act 1813, also known as East India Company Act 1813. Next point, objectives of the Charter Act 1813. First, define the constitutional position of British Indian territories and ended the trade monopoly of the East India Company in India, and Christian missionaries were now allowed to propagate their faith in India. Okay? Next, key provisions of the Charter Act of 1813. Provisions were made mainly related to 4 subjects. See in flowchart 4 subjects. First, renewed the trade rights of East India Company, and second, empowered the local government, and third, education funding. Fourth, permitted Christian missionaries. Okay, let's see in detail one by one. First, renewed the trade right and responsibility of East India Company. This act asserted the crown's sovereignty over British India by defining the constitutional position of British in India. यहाँ मैं आपको रिमाइंड कराते चलूँ कि कंपनी की भारत स्थित क्षेत्र पर ब्रिटिश सॉवरेंटी क्लियरली अनाउंस किया गया। ओके, नेक्स्ट, कंपनीज रूल एंड ट्रेड monopoly in India was extended for next 20 years. Next, the monopoly of the company's Indian trade was ended, except for the trade in tea and with China. यहाँ यह फैक्ट ध्यान रखिएगा कि कंपनी का केवल इंडिया के साथ ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई है, लेकिन उसकी मोनोपोली चाइना के साथ ट्रेड की और टी ट्रेड की बनी हुई है। इसे चार्टर एक्ट 1833 में कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल इंडियन ट्रेड was thrown upon to all British merchants only under a strict system of licensing.
Okay. Next, the company's dividend was fixed at 10.5%. Next point, India's revenue still remained under the company's control. ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. 2090 में IS प्री में इससे क्वेश्चन आया था, जिसे इस वीडियो के लास्ट में मेंशन किया गया है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, empowered the local government. This act also empowered the local governments to impose taxes on the persons subject to the jurisdiction of the Supreme Court and to punish those who failed to pay such a taxes. Next, the act gave more powers for the courts in India over European British subjects. Next, provision, education funding. There was also provision that companies should invest 1 lakh rupees every year on the education of Indians, which was used in religious education and Indian literature, and third, promotion of science. ध्यान रखिएगा कितना इन्वेस्ट करने का प्रोविजन किया गया, 1 लाख रुपीस का. ठीक है. नेक्स्ट प्रोविजन, परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज. दिस एक्ट वॉज टू ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज टू कम to India and engage in religious improvements. Christian missionaries. Okay. Another important feature. First, the company was required to maintain its commercial and territorial accounts separate. Next, now the company could not have more than 20,000 army in India. क्योंकि कंपनी भारत में आर्मी के बल पर कब्जा करती जा रही थी, जिससे कंपनी का कर्ज बढ़ता जाता था. इस पर लगाम लगाने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया. ठीक है, कि अब 20,000 आर्मी इन इंडिया में कंपनी जो है वो रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं. ओके. नेक्स्ट, द कॉलेज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्वेंट्स वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता एंड मद्रास. Next, evaluation of the Charter Act of 1813. Nothing substantial was changed in terms of governance in India except that the Charter Act 1813 for the first time clearly defined the sovereignty of the Crown of United Kingdom over the company's territories in India. Next, the act also empowered the local governments and education in India. Okay. Next, see mind map. Charter Act 1813. This act asserted the Crown's sovereignty over British India. Next, extended another 20 years the trade right and responsibility of East India Company. Next, empowered the local governments. Next, companies should invest 1 lakh every year on the education of Indians. Next, permission to the Christian missionaries to came to India. Next, Indians' revenue still remained under the company's control. Okay. Next, practice question. Matching the following. Okay. I hope you have understood the act well. Also, if you have any query and suggestion, please write in comment box. Please like and subscribe to my channel for new videos. Thank you so much.